सो हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम है केदार एंड भाई स्वागत है सबका प्रोगेमर केदार की एक और न्यू अमेजिंग वीडियो में। सो गाइस, हम लोग वापस एक बार कंटिन्यू कर रहे हैं जेनसिन इम्पैक्ट का एक बहुत ही बढ़िया गेम प्ले। सो गाइस, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले एपिसोड 8 एंड जिन लोगों ने एपिसोड 7 नहीं देखा उनको स्टोरी नहीं समझेगी। सो जाओ, वीडियो ऊपर आपको फ्लैश होता रहेगा या फिर गाइस आप वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा एपिसोड नंबर 7, तो जाके वो देखना पहले। बट उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन। गाइस, मैंने कल स्पिन की थी एंड उसमें मुझे ये बेडो कैरेक्टर मिल चुका है। 5 स्टार कैरेक्टर है एंड बहुत ही ज़्यादा सुपर पावर है। मैं अभी आगे वीडियो में जब फाइट्स लेंगे तब आपको दिखाऊंगा कितना ओवर पावर है। तो भाई बहुत क्रेजी है एंड ये मिलता नहीं ईजीली, मतलब मेरा लक फैक्टर बहुत अच्छा था। सो गाइस, मैंने निकल गई, बहुत अच्छी बात है। बाकी ये अभी मेरे इसके वेपन्स मैंने मैक्स आउट कर दिए हैं। मेरे पास अभी कार्ड लेवलिंग नहीं है जिसके मैं इसके कैरेक्टर को मैक्स आउट कर दूं, बट जल्दी कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक प्रोबेबली हो जाएगी ये मैक्स, मतलब ट्राई करूँगा मैक्स करने का, तो अच्छी खासी इसके लेवल अप हो जाएंगी। बाकी गाइस, अगर मैं बात करूँ तो मैंने नोवेल को भी बहुत अच्छे से ग्राइंड किया है अभी एंड इसके भी वेपन आप देख सकते हो लेवल 37 का है, ऑलमोस्ट क्लोज टू मैक्स है। एंड इसके एट्रीब्यूट ये खुद भी लेवल 25 की हो चुकी है, तो इसको भी मैक्स आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो तक। सो भाई ये अभी मेन DPS होने वाली है एंड इसका डैमेज अगर देखोगे ना तो क्रेजी होने वाले हैं। तो ये और ये दोनों कैरेक्टर्स अभी अपनी टीम में होने वाली है। तीसरा कैरेक्टर मेरे केया होने वाला है एंड चौथी कैरेक्टर गाइस अपनी एम्बर होने वाली है। बस अगर केया के जगह पे मेरे पास एक और 5 स्टार कैरेक्टर था, ये रोजीरिया, बट रोजीरिया को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो फिट नहीं होती मेरे से, मेरे गेम प्ले से सूट नहीं होती, बट आगे भी यूज़ करेंगे। बट अभी के लिए मैं केया को रख रहा हूँ बिकॉज यार इसके वेपन्स भी मैक्स एंड बहुत अच्छे लेवल पे, वो असेंड नहीं हो पा रहे हैं। सो अभी उसको लेवल अप करने से अच्छा जो मेरा ऑलरेडी प्लेयर है उसको ही लेवल अप करो, ऐसा मैंने सोचा। सो मैंने इसको रख दिया है गाइज एंड अभी मेरे पास लिटररी कार्ड्स नहीं है। लेवल 27 का केईया है। सो टीम में सबसे हाईएस्ट लेवल पे अभी केईया है, उसके बाद नोवेल है, उसके बाद जैसे मैंने एम्बर को रख दिया एंड एम्बर के जो मेरे पास 4 स्टार वेपन्स है उन तीनों को भी मैं फर्स्ट फोकस करने वाला हूँ मैक्स आउट करने का। बाकी आप देख सकते हो ये जो बेडो है वो बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है, इलेक्ट्रो टाइप है, इसलिए इसके डैमेज बहुत क्रेजी लेवल पे। अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट सामने से एक बंदा मुझे दिख रहा है स्लाइम, उसकी टेस्ट आउट करते हैं। इस इलेक्ट्रो का ये देखते हैं इसको डैमेज कितना मिलता है बेडो का। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो भाई बहुत ही तबाहीदार डैमेज मिलता है। लेवल 20 मतलब कैरेक्टर लेवल कम है, लेवल 6 की है, बट गाइस वेपन के वजह से भी कितना ज़्यादा आराम से मार पा रही है लेवल 10 के एनिमीज़ को। इवन लेवल 30 के एनिमीज़ भी इसके सामने कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ गाइस। मैंने ट्राई आउट किया है जब ऑफलाइन खेल रहा था तब एंड इट्स रियली क्रेजी गाइस, बहुत बढ़िया कैरेक्टर है। सो अभी बातचीत हो रही है, बट अभी बात करते हैं अपनी वीडियो के मेन आज का मिशन के बारे में। सो गाइस, मिशन ये है, अभी हम लोग जाने वाले हैं लीज़ा को मिलने मॉन्स्टर डैन सिटी में। लीज़ा कौन है गाइस, अगर आपको नहीं पता तो वो हमारी लाइब्रेरियन है एडवेंचर गिल्ड की एंड उसके साथ बात करने वाले हैं एंड उसको कुछ प्रॉब्लम है उसके वर्क में, तो उसको मदद करने वाले हैं आज के एपिसोड में। सो देखते हैं यार, एक साइड मिशन होने वाला है, नॉट अ मेन स्टोरी, बट ये करने के लिए भी लेवल 15 करना पड़ता है। तो अभी हम एडवेंचर रैंक 15 में है, जैसे कि मैंने बोला था आपको, ठीक है। सो अभी करते हैं शुरू, बट उससे पहले गाइस जिन्होंने लास्ट एपिसोड नहीं देखा उनके लिए लास्ट एपिसोड में एक बहुत ही क्रेजी रिवील हुआ है एंड स्टोरी की अगला पार्ट खेलने में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड हम लोग उसको लेवल 18 एडवेंचर रैंक 18 पे खेल सकते हैं मेन स्टोरी को। अभी इस मिशन को करते हैं, थोड़ा बहुत एडवेंचर रैंक ले लेते हैं। बाकी अभी मैं लीज़ा को मिलने आ चुका हूँ गाइस अपने एडवेंचर गिल्ड में एंड ये रही लीज़ा। एक बार उससे बात कर लेते हैं, बट सबसे पहले व्यू पॉइंट में इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं गाइस, जो कि बहुत अच्छा होगा मेरे हिसाब से। लाइब्रेरी एडेड, ओके गाइस, सामने मुझे लीज़ा दिख रही है, उससे बात कर लेते हैं। If you're borrowing a book, please register it in the log. The restricted section is currently not lending any books. Oh, it's you, little cutie. It's so good to see you. More refreshing than a strong cup of tea in the afternoon. Clearly you're meant to be working, but you don't seem to have your heart in it at all. I mean, other than Jean, who really works that earnestly anyway? So, did you have something you needed? Or did you just come to see me? Ooh, smooth talker. Not what I was expecting. So, Miss Librarian, got any books to recommend? Recommended books. Sadly, everything I'd personally recommend is all in the restricted section, which we're not currently lending out. What's with your ominous tone? Oh, right. Would you be interested in checking out the Devat travel guide? I think it would be quite helpful for you as travelers here. Ooh, sounds like it could be helpful. Do you think we could take a peek?
I suppose I can try to find you a copy from the list. Isn't this Lisa's job? What does she mean, I suppose? Oh dear, that's unfortunate. Our copy is currently being borrowed. That said, it is now overdue. Come to think of it, quite a few of our books are now overdue. I really wish people would just return their books on time. Whoa, is Paimon imagining things, or does the air in here suddenly feel a lot more electrified? Such a pain. I'm going out to bring those unreturned books back. If you'd rather get your hands on that copy of the Teyvat travel guide sooner, you'd better come with me. Lisa seems really scary right now. Paimon thinks it would be best if you answer her. You really are such a considerate cutie. Let's see. First, we can go to the souvenir shop. It's called With Wind Comes Glory. So let's meet there shortly. सो गाइस अभी हमारी बात हो चुकी लीज़ा के साथ एंड काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन था लीज़ा के साथ। बाकी अभी वो बोल रही है उसका जो हमें जो बुक देने वाली थी एडवेंचर गाइड, वो वाला बुक किसी और ने ले रखा है ना, उसका एक्सपायरी मतलब ओवरड्यू हो चुका है, तो उसको वापस लेने जाना है। सो अभी हमें सोवेनियर शॉप के पास बुला रही है जो अपने मॉन्स्टर डेंसिटी के पास में ही है। तो यार चलते उसके पास, देखते। मुझे लग रहा है ये टाइम पास करने में बुला रही है, वैसे ज़्यादा सीरियस तो नहीं होगा एक बुक के लिए भाई, इतने मिशन करने पड़ रहे हैं। बाकी अभी एक अच्छा चांस है हम उसके साथ बाहर आ सकते हैं गाइस, वो बहुत अच्छी चांस है। बाकी हम लोग आ चुके हैं गाइस एंड लीज़ा से वापस एक बार बात कर लेते हैं, देखते क्या सीन है। Cutie, you're here. Let's begin, shall we? Hello, Marjorie. Any exciting new items in stock? Why so surprised? Today is such a special day. It's only natural that I'd want a souvenir to remember it by. So it is. In that case, I declare this the day of my life I wish I could get back because I spent my first ever outing with someone taking them on an annoying errand. Don't you think that's a bit long? Well, if it's a souvenir you're after, you're in the right place. I'm sure you'll find something that strikes your fancy, Lisa. Or you could let your new friend pick something out for you. Make it more of an occasion. Yes, let us pick. Take a look around. There's sure to be something she'll love. Take a look around. There's sure to be something. Oracle relic retrieved from some ruins by one of the Adventurers Guild. Sure, there's a bit of wear and tear, but this thing in the painting must be well over 1,000 years old. Though it doesn't make much sense to me. My goodness! This is one of the 3 lost scrolls that make up the Northern Border Wind investigation. What is it doing here? You sure? Can't change again once you've made your mind up. My! You clearly know a treasure when you see it. This is a work of unparalleled significance for the research of ancient people's understanding of the elements. I will gladly accept it. Goodness, is that the time? Marjorie, one last thing. About the legend of Vanessa. Oh, so you're a fan of the gallant Lady Vanessa too? Why didn't you say so? I have all sorts of items I could recommend. For example, this lion's tooth pendant with Vanessa's name carved into it. It was once a medal awarded to a knight by the great lady herself. Oh my goodness. I do apologize. I got so excited when you mentioned Vanessa. I didn't know that book was overdue, even though I take it with me everywhere. I can't believe I didn't put 2 and 2 together as soon as I saw you here. Here you go. Well, since you look up to Lady Vanessa so very much, please be more punctual next time. Yes, Lisa. I will be, Lisa. Let's go and find the next overdue book. सो गाइस फाइनली आफ्टर स्पेंडिंग सम मनी हमें वो बुक मिल चुका है जो हम ढूंढ रहे थे। मतलब लीज़ा को एक बुक मिला, अभी ऐसे और 2 बुक्स हैं। और
वो रिलिक भी हमने उसको गिफ्ट कर दिया एज अ सोविनियर फॉर दिस ट्रिप। बाकी लीज़ा के मुझे कुछ और प्लान्स लग रहे हैं, बुक कलेक्शन तो बस बहाना है, बट दैट डजंट मैटर, वैसे भी हमें कुछ काम नहीं था एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो यार दैट्स वेरी फाइन बाय दैट। एंड ऑब्वियसली फेवरेट कैरेक्टर के साथ अपना ही गेम घूमना इज़ काइंड इंटरेस्टिंग, यू नो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना। बाकी देखते हैं, अभी सेकंड वाले बंदे के पास जाते हैं जिसके पास ये बुक है एंड उसके साथ बातचीत करते हैं एंड देखते हैं, बात कर लेते हैं बाकी क्या होता है। Welcome to Good Hunter. Table for two? 3! Oh, my apologies. Please sit wherever you like and call me over once you're ready to order. So we're gonna eat first and bring up the book situation later? Why, of course. The stress of work really takes the pleasure out of eating, don't you think? Work is that bad, huh? Today's recommendation is the steak. Why don't you order us something, cutie? Good Hunter's signature dish. You sure? Can't change again once you've made your mind up. Finished ordering? Sit here. Let's dine together. सो गाइस अभी हमने ऑर्डर तो दे दिया है, अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं। मतलब यार ये कुछ मिशन कुछ और डायरेक्शन में जा रहा है मुझे दिख रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं यार, वी आर एवरी टाइम फ्री। बाकी अभी बैठ के एक बार नाश्ता कर लेते हैं, फिर अपना बुक वसूली करते हैं। मतलब हमारा बिजनेस लेवल अलग लेवल पे चलता है, ठीक है। हम पहले फ़ायदा करके देते हैं फिर वसूली करते हैं, राइट। ऐसे ही बोलना है लीज़ा का। देखते हैं अभी क्या होता है, बैठ जाते हैं। Beautifully tender and cooked to perfection. No wonder it's their signature dish. It's a shame I can't have more. Time is getting on. I suppose I should carry on with this ghastly thing called let's have a little chat with Sarah about her library book. Would you like to order something else? No, thank you. We're quite satisfied. But I'm afraid I must ask you about the boar princess. The boar brisket? I'm sorry. I think we took that off the menu. She means the book you borrowed. Oh, of course. I came straight to the restaurant after I borrowed it and completely forgotten that I even had it. I'm so sorry, Lisa. I will bring it to the library myself as soon as I finish work. Okay then. But make sure you don't forget this time. Right. On to our next stop then, cutie. सो गाइस अभी हमें सेकंड बुक भी मिल चुका है एंड फाइनल बुक को लेने के लिए हम जाने वाले हैं। वैसे ये वाला काइंड इंटरेस्टिंग था, मतलब लंच एंड रिलैक्सेशन एंड फिर जाके हमने बुक ख़रीदा, मतलब बुक वापस लिया। वो भी मिला नहीं, वो बाद में लाके देने वाले हैं, बट एटलीस्ट कंफर्म हो गया मिलने वाला है। बाकी अभी लास्ट वाले बंदे के पास जाते हैं एंड उससे भी ये कंफर्मेशन या फिर बुक ले लेते हैं एंड मे बी ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा इतने में, मेरे आई होप सो। This is our final call for the day. Welcome. Couples are our specialty. Let me know what you'd like and I'll wrap them up nicely for you. Yes. Now, which book was it that has the line, "A date without flowers is a date without romance"? Why, it just so happens that I would, my kindest cutie. Some flowers for Miss Lisa? What would you like? Dandelions are one of our classics, and a personal favorite of Miss Flora, the shop owner. I know what you're thinking. Most flower shops don't sell dandelions. They're a nuisance to care for. Perhaps Miss Flora likes the sense of floating away to a faraway land. Come to think of it, Miss Flora herself gives people the same impression. You sure? Can't change again once you've made your mind up. Dandelions? They actually sell dandelions? They have a refreshing scent, similar to the one Jean wears. Thank you. Okay, time to get back to business. Donna, do you know why we're here? Back to business? Once again, we see a total lack of respect. The Pale Princess and the 6 Pygmies. Ring a bell. Yes. Oh no, what am I gonna do? I lost the book. A while
while back, I realized it was almost due, and I was getting ready to bring it back to the library, but I couldn't find it anywhere. I looked for days, but nothing. It's like somebody stole it. It should have been there, on my bedside table, right? Uh-oh. That Lisa does some crazy things when she gets mad. I heard that. Well, if it really was stolen, Donna's done nothing wrong. The blame lies with the book thief, and their punishment will be 10 times worse than stealing my book. Like Paimon said, totally crazy. Oh, don't worry about that. As long as I remain librarian, not a single book will go missing for good. I put a unique elemental marker on each book. Our thief will have left a nice set of clues for us to follow. When did Lisa start taking her job so seriously? Paimon always thought she was a total slacker. Hey, sweetie, I've heard your elemental sensitivity is very strong. Why not see what you can do? Elemental sensitivity? Use your elemental sight to look for clues. सो गाइस अभी हमें पता चला है बुक नहीं है, हमें बुक ढूंढना है। अभी मैं मेरा एलिमेंटल साइट यूज़ करके हम लोग अभी उसके सर्च में जाते हैं, पर देखते हैं यहाँ पे मुझे क्लू मिला है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। Looking at the elemental traces, it does seem likely that the book was stolen. So Donna didn't do anything wrong after all. It's not from the restricted section, so it's hardly a book worth stealing. Whoever wanted this book so badly had a strange fixation indeed. So what do we do now? The elemental traces are very faint, but I can tell that the thief took it beyond the city walls. You must see it too, right, cutie? Let's follow the trail and have a look where our thief was headed, shall we? सो गाइस अभी हम उस बुक के फॉलो करने वाले उसके पाथ को एंड देखने वाले कि कहाँ पर ये बुक थीफ भागा है एंड उसके घर में घुस के बुक लेके आएंगे, बिकॉज लीज़ा को अपना बुक बहुत ज़्यादा प्यारा है, उसको बुक तो चाहिए ही। एक बुक भी वो छोड़ने नहीं वाली क्योंकि उसने उस पर ट्रैकर लगा के रखा है उस बुक पे यार, तो क्यों ही छोड़ेगी। बाकी अभी मुझे दूर दूर तक कुछ ओके मिल गया मुझे यहाँ पर सामने की तरफ, ये कुछ तो है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओके द एलिमेंटल ट्रेसेस यार, बट इट सीम्स आवर थीफ डिडंट स्टे हियर फॉर लॉन्ग। ऑब्वियसली वो क्यों रुकेगा मॉन्स्टर टैंक के आसपास यार, पकड़ा जाएगा ना, वो दूर ही जाएगा। मेरे हिसाब से ये उस वाइट वाली इनका ही काम है, आई थिंक उनको एबिस ऑर्डर बोलते हैं, एबिस ऑर्डर का ही काम मुझे लग रहा है। ठीक है, बाकी भी इसमें चलते चलते बहुत ढूंढा एंड यहाँ पर मुझे ये बंदे दिख गए एंड सोचा कि क्यों ना बिडो का यूज़ किया जाए यहाँ पर एंड आपको ज़रा डैमेज दिखा दे। ओके तो लिटरली गाइस ये लोग 17 या 7 लेवल के बंदे यार, इतने भी प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बहुत बढ़िया फाइट दिखाऊंगा 30 लेवल्स के साथ नेक्स्ट एपिसोड में भी, बट आप देख सकते हो गाइस ये जो अटैक स्ट्रेटजी है वही वर्क करती है बहुत अच्छी एंड भाई मुझे लेवलिंग का कार्ड्स भी मिल गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी गाइस अभी चलते चलते हम लोग फाइनल स्पॉट की यहाँ पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर फॉलो ट्रेल्स जा रही हैं एंड यो ओके तो गाइस हमें जगह मिल गई, देखते हैं यहाँ पर क्या है एंड सी। The thief lives inside ruins? Mondstadt people do have some strange quirks. Please do not jump to such a preposterous conclusion about the living habits of Mondstadt's residents. This seems far more likely to be the work of some none too friendly troublemakers. It's like you can read my mind. This is more likely to be the Abyss Order's doing. They do seem to have a way of slipping in and out of places like ghosts after all. Also, there's an elemental seal at the entrance. It looks like the result of an Abyss mage's magic. A seal? How are we gonna break it? Not to worry. If you think a little magic can keep me out, think again. Why is that? Come on. Whoa! So this is what Lisa's like when she's hard at work.
सो गाइस अभी जो मेरा डाउट था वो कंफर्म हो गया है, बिकॉज गाइस ये एबिस ऑर्डर का ही काम है। ये सारी मॉन्स्टरलैंड में जो भी हड़बड़ी मची रही है पिछले स्टॉर्म ड्रैगन के आज से गाइस, जितने भी चीज़ें कर रही है सब एबिस ऑर्डर ही कर रही है। यानी एबिस ऑर्डर की लीडर आई थिंक ये मेन कैरेक्टर की बहन ही है। सो आई थिंक, मुझे पता नहीं है, स्पॉइलर आई डोंट लाइक स्पॉइलर, सो डोंट गिव मी द स्पॉइलर अगर आपको पता रहेगा तो। बट मुझे लग रहा है वो हो सकती है मेन विलन, मतलब मेन विलन नहीं, मे बी साइड विलन हो सकती है, या फिर वो गॉडेस उसको पोसेस करके उसको कंट्रोल कर रही रहेगी। आई डोंट नो एनीथिंग, ओके, मैं सिर्फ गेस मार रहा हूँ। तो कमेंट में बताओ अगर आप मेरा गेस राइट है कि नहीं, बस येस और नो में जवाब देना गाइस। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं एंड अंदर जा रहे हैं। एंड ये जो लीज़ा है इसका भी कनेक्शन हो सकता है आई थिंक एबिस ऑर्डर के साथ, बिकॉज उसने इतने ईजीली इस पूरे केव का जो सील था उसने इतने इजीली तोड़ दिया जैसे कि चाइल्ड्स प्ले हो। सो आई थिंक, और उसके पास भी जो हाइड्रा का जो आई थिंक जो इलेक्ट्रो का जो सिंबल है वो उसके पास भी है। सो ये नाइट ऑफ द फोनियस में क्या कर रही है आई डोंट नो। एंड मैंने यस एक और चीज़ देखी थी स्पॉयलर्स में, मतलब ऐसे ही देख रहा था मैं, सर्च कर रहा था गेम के बारे में थोड़ा, तो गाइस मुझे दिखा था कि बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग नेशन से, हर एलिमेंट पे बेस पे। सो अभी ये हम लोग एनोमा विंड नेचर के पास इस वाले नेशन में, एंड अपने मेन कैरेक्टर के पास इस वाले नेशन में कुछ विंड की पावर से। नेक्स्ट नेशन हम लोग जाएंगे वो रॉक नेशन होने वाला है, जो कि लेवल 18 AR 18 के बाद हम लोग जाएंगे, जल्द ही जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, ठीक है। तो वो भी करना है, मैं मैप एक्सप्लोर करने वाला हूँ अभी से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार मैप एक्सप्लोर करना। बाकी मुझे यहाँ पर चेस्ट मिल गई है, फटाफट से ले लेते हैं। बाकी गाइस ये लीज़ा जो है ना वो बहुत डेंजर है, मतलब दिखने में जाने का नहीं यार, बहुत डेंजर कैरेक्टर है। मतलब एक बार गुस्सा आ गया तो भाई फोड़ बीट जाएगी भाई, कुछ पता नहीं इसका, जैसे पायमोन बोल रही थी। बाकी अभी हमने को इस मैंने जो बैरियर है एक्टिवेट जस्ट किया था बट ये ऑफ हो गया। ये भी जो अभी मैंने बेडो है, बेडो भी एक इलेक्ट्रिक कैरेक्टर है। सो मैंने लीज़ा को इसलिए टीम से निकाला बिकॉज बेडो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। लीज़ा की जो डैमेज थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, मे बी लेवल 90 के होने के बाद लीज़ा कुछ ज़्यादा डैमेज करे, बट अभी के लिए बेडो इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। जो लेवल 6 का कैरेक्टर लेवल 30 के कैरेक्टर्स को मार सकता है बहुत ईजिली विदाउट गोइंग डाउन। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी ऑसम। ओके, सो ये एक बढ़िया कैरेक्टर है। उसके बाद मेरे पास जो रोजेरिया है वो भी बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, मतलब अपनी केइया से थोड़े स्ट्रॉन्ग है वो बात करें तो। बट गाइस पता नहीं, मैं सिर्फ केइया को यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए, तो मेन केइया पे फोकस करेंगे, उसके बाद में भी स्विच कर देंगे। और एक और ये जाए एम्बर तो भाई ओवर पावर है, फर्स्ट एपिसोड रिपोर्ट कर रहा हूँ मैं। एम्बर की हर चीज़ हर एक मिशन में वो काम आती है। सो मैंने इसलिए, मेरे पास जेंगली भी है, जेंगली भी बोल सकते हो उसको, आई डोंट नो, इनका प्रोनाउंसिएशन में भी गलत हो सकता है गैस। सो थोड़ा सा इग्नोर मारो प्रोनाउंसिएशन पे, बट इनके नाम थोड़े अलग है, ठीक है। सो वो भी है, तो जेंगली भी है मेरे पास, वो भी 5 स्टार कैरेक्टर है, वो जो स्किन में मिली थी, एंड वो भी मैक्स आउट है, बट स्टिल मैं उसको यूज़ नहीं करता बिकॉज एम्बर इज टू डूड यार, एम्बर। बट उसके बाद गाइज मैंने ये जो नोएल का डैमेज मुझे पता नहीं था ये 5 स्टार कैरेक्टर है, मैंने बस पिन किया था, स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता था। बट अभी गाइज मैं जब देखता हूँ बेडो और नोएल का अटैक्स कॉम्बो, भाई बहुत तगड़ा डैमेज है। आप सामने देख सकते हो यार, ये जो कैरेक्टर्स जो सामने वाला स्नाइपर लेवल 19 की है और बेडो लेवल 6 की है, फिर भी पेल दे रही है, फिर इतना भी डैमेज नहीं ले रही है, समझ रहे हो। बिकॉज मे भी मेरा वेपन अच्छा है उसके वजह से भी होता रहेगा, बट पता नहीं यार बहुत तगड़ा डैमेज आ रहा है। एंड ऊपर से सामने आइस वाले एलिमेंट्स के बंदे, सो इनको तो इलेक्ट्रो वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करता है। वाकई में वैसे इस गेम के बारे में थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, सो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, बट पूरा गेम एक्सप्लोर करेंगे एंड ज़रूर करेंगे। बाकी आप देख सकते हो भाई फाइट तो बहुत तगड़ी चल रही है। वैसे हमने ये मिशन स्टार्ट किया था प्यार इसी स्टार्ट की, हम सिर्फ लीज़ा को मिलने गए थे, फिर उसने हमें फंसा दिया उसके बुक कलेक्शन एंड डेट में। एंड अभी गाइज हम उससे एक चोर को पकड़ने आ गए किसी डंजन में, अंडरग्राउंड डंजन में, एंड अभी इन स्लाइम के साथ रह रहे हैं। मतलब भाई क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता। बाकी गाइज इसका अल्टीमेट एबिलिटी बहुत ओवर पावर है, एंड जो इनके जो कॉम्बो होते हैं ना गाइज वो बहुत ओपी हो सकते हैं। मतलब एम्बर का जो फॉल, उसके बाद बेडो का अल्टीमेट, फिर नोएल का बर्स्ट, केइया का बर्स्ट, सब साथ में मारेंगे तो भाई तबाही। एंड भाई यहाँ पर आप देख सकते हो भाई लीज़ा भी कुछ कम नहीं है, उसका डैमेज देख रहे हो, उसकी शील्ड को बहुत तगड़ा डैमेज हो रहा है। बाकी ये जो नाइट ऑफ द एबिस मेज होते हैं ना, ये स्टार्टिंग के मतलब अभी हम लोग वर्ल्ड लेवल 1 भी नहीं है अपना, तो इसमें बहुत दिक्कत देते हैं। मे भी आगे जाने के बाद कुछ अलग मॉन्स्टर है, ये एक और हरक्यूलेस जो बीच बीच में आते हैं बड़े बॉसेस, वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। बट अभी थोड़े से नॉर्मल हो गए बिकॉज अभी मेरे कैरेक्टर्स जो है वो काफ़ी पावरफुल हो गए फॉर द स्टार्ट।
बट जब भी ये बैरियर वाले आते हैं ना, जो बैरियर होता है, इनका बैरियर डाउन करके इनको फिर मारना रहता है, वो थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर देता है हमेशा, और डैमेज भी कभी कभी बहुत ज़्यादा दे देते हैं। सबसे ज़्यादा डैमेज तो वो बर्फीले पहाड़ में आते हैं, उस पर मैंने अभी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की है, बट हो जाएगा काम। बाकी आप देख सकते हो डैमेज, आप देख सकते हो नोवेल का, इसलिए मैंने नोवेल को स्विच किया। मेन कैरेक्टर जो था उसको मैंने हटा दिया, बिकॉज वो पहली बात तो मैं उसको असेंड नहीं कर सकता, मेरे को आइटम्स चाहिए उसको मैक्स आउट करने के लिए, सो मैंने उसको हटा दिया, इसको रखा। अब दिस मिशन कंप्लीट हो गया, देखते क्या सकते। How did you find this place? It's so well hidden! I have no interest in finding out where you little rascals hide yourselves away, but I do want my book back. Tell me, how is it that you have the time to conceal your stronghold and apply a magic seal, but not to sign out a library book in the proper manner? You have no respect whatsoever for other people's work. You just want the book? I was unaware that anyone in Mondstadt was concerned with unearthing the secret hidden inside this book. Who are you? The librarian, although I believe that should be quite clear already. Return the book. This is an ultimatum. Since you insist on concealing your identity, I have all the less reason to give you that book. After all, it contains the secret. Huh? What are you doing? Such concentrated elemental power! Please don't! Naughty boys who don't do what they're told need a little punishment to keep them in line. This is why I call it troublesome work. We'll just need to find the book ourselves. It should be around here somewhere. गाइस अभी मैंने वजह से बोला था लीजा बहुत डेंजरस है भाई, उसको बोलने में नहीं दिया, बात खत्म होने से पहले ही उसको पेल दिया। अब गाइस हमें बुक को ढूंढना है, बुक इजीली मिल जाएगा, बट गाइस ये लीजा है कौन, ये भी थोड़ा बहुत मिस्ट्री है, बट बाकी कल पता चल ही जाएगा जब स्टोरी कंटिन्यू होगी। देखते क्या होगा। Princess and the Six Pygmies. Paimon remembers that name. Is this the one you were looking for? That's the one. It's a good thing it isn't damaged. Otherwise what? Are you telling me you have even more crazy punishments up your sleeve? I would have probably needed to dish out a little taste of one of my potions in that case. Then again, as I said, it isn't from the restricted section, which is the only reason I would let the average citizen borrow it in the first place. And it doesn't appear to have any abnormal elemental properties, save for the markings I put on it. Yeah, it seems like just an average storybook. As far as my duties as a librarian go, my troublesome work is finished. Since this book has piqued your interest, why don't I let you borrow it? There's no time limit for you. I will register you as custodian rather than borrower. This is an exclusive privilege reserved for trusted citizens only. Exclusive privilege? Why does Paimon feel this is just your sneaky way of offloading your troublesome work onto someone else? Excuse me, are you in some way dissatisfied with my work? Good, you're amenable to reason then. I do wish I could keep you by my side as my personal assistant. My work here is done. I'm going back. Don't forget to register at the library when you have a spare moment. सो गाइस अभी मिशन तो कंप्लीट हो चुका है एंड लीज़ा को अपना बुक मिल चुका है एंड उसने अभी कहा है कि हमें वो कस्टोडियन एज द लाइब्रेरी बनाने वाली है, मतलब हैज़ रजिस्टर करने वाली है, हम वो बुक ले सकते हैं एंड हम उसको रिटर्न भी नहीं कर सकते, मतलब बाद में आफ्टर ड्यू डेट भी किया तो भी चल जाएगा, बट मैं ये रिस्क नहीं लूँगा। आफ्टर सीन क्या हुआ एबिस में इसके साथ, लीज़ा बहुत डेंजरस है भाई, उससे दूर ही रहेंगे, बुक की वजह से ज़रूरत नहीं लगेगी। बट जैसे मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, वो जो बुक उसने दिखाया जो ओबिस मेज ने चोरी किया था, उस बुक में ऐसा था क्या कि उसने इतना चोरी किया, द सीक्रेट बोल रहा था, क्या उस रियली उस बुक में कुछ है एंड क्या मुझे वो पढ़ना चाहिए? इस कमेंट में जाकर मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज अगर स्टोरी से रिलेटेड है तो ज़रूर करेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, बट मुझे नहीं लगता वो कुछ इतना सीरियस होगा, एक टाइम पास साइड स्टोरी थी, बट मे भी हो सकता है। बाकी अभी वो लीज़ा मुझे वापस बुला रही है मॉन्स्टर डैन में,
हमें, क्योंकि ऑब्वियसली अभी वो हमें लाइब्रेरी का कार्ड देगी जिसमें हम कस्टोडियन हैज़ अ रोल यूज़ करने वाले हैं उस बुक को। तो एक बात अच्छी हुई, हमें ये वाला रिवॉर्ड मिल जाए जिससे कि हम लाइब्रेरी में कभी भी आ जा सकते हैं, फुल इज्जत मिलेगी हमें बिकॉज वी आर द कस्टोडियन। बाकी यहाँ से मैं जा ही रहा था एंड नीचे मुझे चेस्ट दिख रही है, एंड चेस्ट दिखती है जिनिस में तो यार मिस नहीं करते यार, ले लेते, कॉमन हो या प्रेस्टिजियस हो सारी चेस्ट लेंगे। बाकी एडवेंचर रैंक 15 है हमारा, हाफ हो चुका है, 16 होते होते हो जाएगा। बाकी अभी चलते यार मॉन्स्टर डेन सिटी में वापस से लाइब्रेरी के पास एंड मिलते लीजा से एंड देखते यार क्या हमें वो जो एडवेंचर गाइड बुक उसने प्रॉमिस किया था वो देती भी है या फिर नहीं, और आगे क्या सीन है। वैसे मुझे तो लग रहा है मिशन कंप्लीट हो गया है, तो भी मुझे लग रहा है वो दे देगी। बाकी अभी देखते हैं और कोई काम ना दे दे वो लोग, वैसे भी मिशन बहुत बड़ा हो चुका है, मतलब कहाँ हमने स्टार्ट किया था उसको एंड भाई डंजन में कहाँ एंड किया भाई, मतलब कुछ भी। बाकी देखते हैं, अभी आ चुके हैं यहाँ पर, एक बार बात कर लेते हैं। You've returned. The paperwork is done. You are now the custodian of this book. Thank you, Miss Lisa. But Paimon thinks we're forgetting something. Look, over there on the shelf. Isn't that the Tavat travel guide? And look how many copies there are. The Tavat Travel Guide is a serial publication. It is not part of the library's formal collection. Oh. Take one. Consider it your compensation for being Lisa's little helper today. With you by my side, my troublesome work was a little less dull than usual. The Tavat travel guide was just bait to get us to do a day's work. I hadn't anticipated that a few routine returns inquiries would take us out of the city, let alone down into some underground ruins. As compensation for dragging you into all this bother, take these souvenirs. Wow! Lisa went and bought us some special souvenir. In fact, they were intended for our next outing. But, never mind. We can discuss next time's activity when the time comes. I hope you are looking forward to it. तो गाइस फाइनली हमारा काम हो चुका है, जैसे कि मैंने कहा था यार लीसा बहुत ज़्यादा होशियार है, उसने सारा काम हमसे करवा लिया। एंड ये बुक पहले से अवेलेबल थी लाइब्रेरी में, फिर भी हमें ये सब करना पड़ा, बट कोई बात नहीं यार, मज़ा तो बहुत आया लीसा के साथ पूरा मतलब मिशन करने में। एंड यू नो एंड बाकी अभी उसने प्रॉमिस किया थी नेक्स्ट टाइम भी वो हमें बुलाएगी इस काम के लिए, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। बाकी गाइज आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है एंड मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स भी मिले, तो एक काम करते हैं, अभी आए गए तो यार इसको थोड़ा लेवल अप कर लेते हैं। आपके सामने लेवल 6 की है, तो लेवल +10 मेरे पास कार्ड्स है तो यूज़ कर लेते हैं, इसको लेवल कर देते हैं लेवल 16 की। सो गाइस हमारी बेडो जो है लेवल 16 की हो गई है, ऑलमोस्ट लेवल 20 एंड ये तो मैक्स है ही। सो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो प्लीज़ बताना, प्लेलिस्ट जाके चेक करो फॉर प्रीवियस वीडियोस एंड स्टे ट्यून्ड रहने के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को, मैं रोज़ वीडियोस लाता रहता हूँ। बाय बाय, सी यू सून।